लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो एक्सप्रेशन है दैट वाज योर डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू। ये हमने ट्राई भी किया था एक्सप्रेशन को, और साथ में अनसर्टेनिटी इन एनर्जी देखा था दैट केम आउट टू बी डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू। Certainty in energy, product of uncertainty in energy and time is greater than equal to h cross by 2। उसके बाद हमने बात की थी रिलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सम हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट्स, तो उसमें से एक एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, दैट वाज योर इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। द सेकंड वन इज position measurement of electron by gamma ray microscope। एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखेंगे तो दिस कर्व्ड लाइन it represents your photon, this one is your photon of momentum h over lambda। इसका मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम है इंसिडेंट फोटोन का जो मोमेंटम है वो है h ओवर लैम्डा, और ये स्ट्राइक कर रहा है किसी इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन गेट recoiled along this direction and the photon it gets scattered along OB or OA। This one is a microscope, gamma ray microscope here। ये gamma ray microscope है। और अगर आपको कॉम्पटन इफेक्ट का ध्यान हो तो जब भी इस तरह का कोलिजन होता है तो इस कोलिजन में जो मोमेंटम या वेवलेंथ है that get changed। अगर इनिशियल वेवलेंथ that was lambda, then it becomes lambda prime after scattering। Momentum now becomes h over lambda prime, h over lambda prime here। Now the momentum change from minus theta to plus theta मीन्स अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस थीटा टू प्लस थीटा। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज की अगर हम बात करें, अगर स्कैटरिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन है दैट मूव्स अलोंग एच ओवर सॉरी दैट मूव्स अलोंग ओ बी डायरेक्शन। स्कैटरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन के साथ इसके कोलाइड होता है और इट गेट्स स्कैटर्ड अलोंग ओ बी। ओबियसली हम माइनस एक्स डायरेक्शन की बात करें, अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, माइनस एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम, द component momentum along x direction that will be given by minus h upon a lambda prime। this one is your lambda prime, lambda prime, lambda prime sin of theta। this one component, इस component की बात कर रहे हैं, component along x direction। तो क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन की बात है तो माइनस एच ओवर लैम्डा प्राइम साइन ऑफ थीटा ये कंपोनेंट रहेगा। और अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात करें देन द मोमेंटम कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, along x direct positive x direction it will be h over lambda prime sin of theta, and obviously it will belong to your scattering along OA। अगर photon that gets scattered along this direction OA direction, तो जो जिसका कंपोनेंट है दैट इज गिवन बाय h ओवर लैम्डा प्राइम sin of theta। तो कुल मिला के कहें कि जो आपका जो फोटोन है दैट विल बी विद इन दीज टू पॉइंट्स बी एंड ए। या फिर हम थीटा की टर्म कहें तो माइनस थीटा और थीटा के बीच में होगा, या फिर अगर मोमेंटम की टर्म में कहें तो माइनस एच ओवर लेमडा प्राइम साइन ऑफ थीटा, तो ये एच ओवर लेमडा प्राइम साइन ऑफ थीटा के बीच में रहे होगा मोमेंटम। सो we can say that this if the photon is scattered along OA, अगर OA डायरेक्शन में स्कैटर हो रहा है तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर रहे हैं मोमेंटम ट्रांसफर की, इलेक्ट्रॉन को कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ।
तो ऑब्वियसली अगर इनिशियल मोमेंटम फोटोन का h ओवर लैम्डा है, और अगर ओ ए डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ओ ए डायरेक्शन में जो मोमेंटम फोटोन का रह जाता है स्कैटरिंग के बाद वो है h ओवर लैम्डा प्राइम साइन ऑफ थीटा। तो जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ दैट विल बी ऑब्वियसली द डिफरेंस ऑफ दीज टू, इनिशियल माइनस फाइनल। योर इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल माइनस फाइनल मोमेंटम, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। अगर इन दोनों का डिफरेंस है तो इट विल कम आउट टू बी h ओवर लैम्डा माइनस h ओवर लैम्डा प्राइम साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इफ दिस फोटोन गेट्स स्कैटर्ड अलोंग OB, अगर ये OB डायरेक्शन में स्कैटर होता है तो then the momentum transfer to electron that will come out to be initial momentum. Initial is again h over lambda, and the final momentum is your minus h over lambda prime sine of theta. So it will be h over lambda minus h over lambda prime sine of theta. तो जो मोमेंटम है obviously the momentum transferred to electron if photon gets scattered along OB, that will be h over lambda plus h over lambda prime sin theta minus minus will become plus here. So दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, और इस टाइम पे क्या है, ये है मोमेंटम ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन when photon gets scattered along OA, and this equation number 2 that is the momentum transferred to electron when photon gets scattered along OB. तो हम बात किसकी कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो दिस इज योर मेजरमेंट ऑफ दिस पोजीशन मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे थे। इस केस में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चेंज इन मोमेंटम। सो मोमेंटम चेंज मीन्स हमने ये तो देख लिया कि मोमेंटम जो है दैट वेरीज फ्रॉम द एंगल माइनस थीटा टू थीटा, या फिर हम कहें दैट will vary from equation number 1, momentum given by equation number 1 to equation number 2. So uncertainty in momentum of electron, हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की है ना। तो uncertainty in the momentum transferred to electron, so it will be given by the difference of these two, equation number 2 and 1. So 2, these two terms belong to equation number 2 minus the momentum transferred to electron given by equation number 1. इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे it will come out to be 2h over lambda prime sine of theta. This is your delta p. अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, लास्ट ईयर वेव्स एंड ऑप्टिक्स में आपने देखा होगा, तो दिस रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय this expression, that is the wavelength which particle enters the microscope divided by 2 times sine of theta. Theta is the angle through which it enters the microscope. So this is your resolving power. It is the जो resolving power होगी that will be the uncertainty in position. ये जो resolving power है यही uncertainty in position होगी। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट ले लेते हैं डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का, डेल्टा पी इज द मोमेंटम ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा एक्स इज द रिजॉल्विंग पावर of the microscope, that how accurately this microscope can resolve. Right, so this will give you a particular relation like this. It will cancel out, lambda prime will cancel out, sin of theta will cancel out, 2 cancel with 2, it will come out to be h. So यहाँ पे फिर से रिलेशन वही है, that delta x into delta p equals to h, which is again the statement of your uncertainty principle. So in this way, this uncertainty principle that gets again verified, and this result again agrees with the uncertainty principle. चलिए इसकी अब applications की बात करते हैं। So applications are there, so I will take them one by one. Applications of uncertainty principle. First one is non-existence of electron in nucleus.
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है। पहली एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हम ये देखें कि क्या इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके बारे में क्या कहता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस का साइज है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर्स। इसकी रेडियस जो है दैट इज 10⁻⁻14 मीटर्स। तो अगर न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻14 मीटर्स है तो दिस साइज विल बी द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स इसके बीच में ही आपका इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। So this is uncertainty in position. It will be equal to uncertainty in position 10⁻⁻14 meters. Delta x equals to this. Uncertainty principle that gives us delta x, delta p is greater than or equal to h cross by 2. तो अब तक clear हो गया होगा ना? So delta p will come out to be greater than or equal to or this h cross by 2 delta x. This relation 2 delta जो delta x है उसको right hand side पे denominator में ले जाते हैं, the equation will become this. This uncertainty in momentum that will come out to be, अगर इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रही हैं, h cross is your 1.05 I think है ना, so 2.05 it is 1.05 into 10 to the power minus 34. So this multiply 10 to the power minus 34 divided by 2 into 10 divided by 2 into 10 to the power minus 4 is the delta x. So इसे सॉल्व करेंगे it will come out to be this minus sorry 5.3 into 10 to the minus 21 kg meters per second. अब इलेक्ट्रॉन since it is moving with the relativistic velocities within this, उसमें जो एनर्जी का रिलेशन है that is the relativistic one. यहाँ पे it is in terms of your relativistic mass m naught square c to the power 4 plus p square c square whole power 1 by 2. So फिजिक्स बुक्स में तो इसे जो m naught square c to the power 4 है that is very small in comparison to this, it has been neglected there. But even if you substitute, instead of neglecting it, if you substitute this value there, so it will come out to be approximately 10 to 20 mega electron volt. इसको solve कर लेना, it will come out to be approximately 10 to 20 mega electron volt. इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता तो उसकी जो एनर्जी होती तो वो रहती 10 टू द वो रहती 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 10 टू 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास होना चाहिए। पर एक्चुअल में जब बीटा डिके होता है तो जो नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं न्यूक्लियस से दे कैरीज एनर्जी ऑफ 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी है तो ऑब्वियसली we can see that electron cannot exist within the nucleus. So electron हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर एग्जिस्ट करता तो इसमें एनर्जी होती, पर एनर्जी जो पार्टिकल्स उसमें से निकल रहे हैं उनकी एनर्जी तो कम है, दैट इज 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैनॉट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस से। इसके बाद बात करते हैं मिनिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ बॉक्स। दिस इज सेकंड एप्लीकेशन, पार्टिकल इन अ बॉक्स। अगर हम दिस पार्टिकल इन अ बॉक्स की प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए इसे हम दो तरह से इजी वे में अगर देखें तो एक कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैपेसिटर के कुछ डायमेंशंस हैं, सपोज उसके डायमेंशंस एल हैं और उसमें हम एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन उसमें रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जो है वो मूव करता है, बट विद इन द लिमिट्स एल। और यही चीज़ हम अगर मटेरियल के अंदर चलें तो मटेरियल के अंदर जो हैं डिफरेंट एटम्स हैं, न्यूक्लियाइज हैं, तो वहाँ पे द पोटेंशियल पेरियोडिक पोटेंशियल्स हैं। तो अगर पेरियोडिक पोटेंशियल से देखते पोटेंशियल दैट चेंजेस टू डिस्टेंस एल, राइट। सो वहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है जिसमें ये पार्टिकल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है दैट इज एल। तो
this uncertainty is simply represented by the length L of the box से. अगर इसे बनाने की बात करें तो I will try with this picture. You know, box situation like this. Somewhere this is a particle here, and L is the length. L is the length of this box. So obviously this particle is bound within this box of length L. So in this case, this delta x, that will be equal to the length L of the box. This is the length L of the box. Right. So to uncertainty in position of this particle or this electron within this box, that is L. That is given by L here. So from uncertainty principle, this momentum, uncertainty in momentum, that will be obviously taking this delta x to the denominator on the other side. So h cross over delta x, and delta x for the particle in a box, it equals to L. So substituting for delta x equals to L here. So delta p equals to h cross over L. This gives the uncertainty in momentum of the particle, and this is the minimum momentum with which the particle is moving within the box here. So it will be simply given by p equals to delta p equals to h cross over L. But we know that kinetic energy of the particle within the box, that is given by half mv square. Simply multiply and divide by m, it will come out to be mv square divided by 2m. This is your kinetic energy, no? We can write it as 1 by 2 and mv square there. You multiply this expression half mv square, multiply and divide by m, so it will become m square v square divided by 2m. So m square v square is p square over 2m. Okay. Now this p square over 2m. Now substitute for p equals to h cross over L from this expression. So it will come out to be h cross square over 2ml square. And this is the minimum energy of the particle in the box. इस particular box में अगर particle है तो उसकी जो minimum energy है, that will be given by h cross square over 2ml square. So we can see that this particle in a box that cannot have energy, that cannot have zero kinetic energy, even at 0 kelvins, it will not have energy. It will not have zero energy there. It will have some minimum energy, and that energy is given by this expression h cross square over 2ml square there. आगे चलते हैं और एक और एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ uncertainty principle, and that is the size of atom. We can estimate the size of atom by using uncertainty principle.
इसलिए हमने सबसे पहले जो चीज़ ली है वो है हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम हम लेते हैं तो उस हाइड्रोजन एटम का जो साइज है, उसकी जो रेडियस है, लेट अस assume that it is given by r naught here. It is simply given by r naught here. If it is given by r naught, so uncertainty in position of electron. अब हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉन that is given by delta x equals to r naught, जो उसकी रेडियस होगी उसके बराबर ही उसकी अनसर्टेनिटी रहेगी on the both sides, right? So we can take this r delta x, we can substitute in uncertainty principle, the delta x equals to r naught there. So the momentum, uncertainty momentum, that will come out to be h cross over delta x over h cross over r naught, and the corresponding minimum momentum, this corresponds to minimum momentum of the part, this electron within the hydrogen atom within its orbit. This is the minimum momentum corresponding to this. Minimum momentum corresponding to the first orbit, or this is the radius of the first orbit of the hydrogen atom. Okay. So this is the minimum momentum. So corresponding energy, kinetic energy, corresponding energy, total energy of the hydrogen atom, that will be the sum of the kinetic energy and the potential energy. Kinetic energy अभी मैंने बताया आपको, kinetic energy is given by p square over 2m. And what about potential energy? Potential energy is given by the put of the charges there. Proton के ऊपर charge plus c, electron पे minus e, so it will be minus e square divided by 4 pi epsilon naught, and the separation of the electron from the proton, that is r naught. So sum of these two expressions. So this is energy of electron in the first orbit. फर्स्ट ऑर्बिट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो रेडियस है दैट इज आर नॉट, और आर नॉट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इस आर नॉट से ये फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी जो एनर्जी है दैट इज सम ऑफ दीज टू, that is given by, simply substitute for this p equals to h cross over r naught. So h cross over r naught substitute करेंगे तो it will come out to be h cross square over r naught square there. This negative sign that will come out from outside here, outside the bracket there will be minus e square over 4 pi epsilon r naught. This is equation number 1. ये तो एनर्जी आ गई कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज गिवन बाय दिस टोटल एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एटम हमारा स्टेबल है, स्टेबल तभी होता है जब एनर्जी हमारी मिनिमम हो, है ना? फॉर स्टेबिलिटी एनर्जी शुड बी मिनिमम, तो मिनिमम मीन्स कांस्टेंट, सो दिस चेंज इन एनर्जी विद आर नॉट दैट शुड बी जीरो, दैट आई शुड नॉट चेंज विद आर नॉट। सो अगर ऐसा है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद आर नॉट, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू आर नॉट, आर नॉट से अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर नॉट डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है आर नॉट स्क्वायर, इट विल go to the numerator as r naught to the power minus 2, so its differentiation will be minus 2 and minus 2 minus 1, so minus 3, it will simply sit in the denominator there as r naught cube there, so minus 2 outside. For the next one it is minus r naught, if you take r naught to the numerator, so it will be minus r naught, so minus minus plus, it will be minus 1 minus 1, so minus 2, and it will sit in the denominator as r naught square there. So simple differentiation है, ठीक है। इन दोनों को ही डिफरेंशिएट किया है क्योंकि बाकी चीज़ें h क्रॉस स्क्वायर 2m that is independent of r naught, e square over 4y epsilon naught is independent of r naught, so only thing that gets differentiated is your r naught square and r naught है, तो इनको डिफरेंशिएट किया है और कुछ नहीं। डिफरेंशिएट करने के बाद इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे, 2 cancels with 2, it will come out to be, sorry, 2 cancels with 2, and you just take this particular term to the right hand side, h cross square over this m r naught cube cancels with 2, so h cross square over m r naught cube will be there, r naught square cancels the cube there on the other side, 2 cancels the 2 there, so take this r naught to the numerator on the left hand side and all the other terms to the right hand side, so it will come complete, it will give you r naught equals to h cross square 4 pi epsilon naught over m e square
while you substitute the values, all these are constants. जब इन values को आप substitute करोगे, epsilon naught की value pi h cross m e m is the mass of electron, e is the charge on the electron. So it will come out to be nearly 0.5 angstroms. 0.5 angstroms. Okay. Now substitute for this 0.5 angstroms, or substitute for this R naught. R naught in equation number 1. R naught की value को उठाओ और equation number 1 में substitute कर लीजिए यहाँ पे. Substitute for R naught here and R naught here. While you substitute it there, it will come out to be this h cross over 2m as it is. This thing belongs to your R naught square there, squaring R naught here, squaring this. So it will give you h cross to the power 4 4 is 16 pi square epsilon naught square m square e to the power 4 minus here this one is e square over 4 pi epsilon naught as it is, h cross square 4 pi epsilon naught here, m e square. So we have substituted for r naught here. अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखोगे, कुछ चीज़ें इसमें कट जाती हैं, जैसे h cross square that cancel this 4 here, it will be h cross square in the denominator, m cancels m there. So you will see that most of the things they will came out common there. So this e to the power 4 m over 8 pi square 8 h cross square pi square epsilon naught square. Here in the bracket it is 1 by 2 minus 1. It got cropped. इस इमेज को मैंने लिखे आया था तो यहाँ पे ये पोर्शन जो है क्रॉप हो गया था. So it is minus, within the bracket is minus 1, sorry, 1 by 2 minus 1, minus 1, 1 by 2 from here and minus 1 from this expression. The rest of the things they will come out as common there. So while you solve it, I think I have taken as 8 there. It will come out as 16. 4 4 is 16, 4 4 is 16. 16 is there, so it is not, it will not be 8. It will be 16 here in the denominator. 16 in the denominator is the corrected phase. So while you solve, while you substitute for E, M, H, pi, epsilon naught, it will come out to be some value in joules. Divide that by the charge on electron, that is 1.6 10 to the minus 19, and convert that into electron volt. It will come out to be minus 13.6 electron volts. So which you know that this is the energy of electron in the first orbit of hydrogen atom. We already know this, right? So in this way, this uncertainty principle that not only estimates the size, it estimated the size in approximately 10 to the power minus 10, because size of the atom, size of hydrogen atom, at the same time it also gave the correct, almost correct value of your energy of electron in the first orbit of hydrogen atom there. So I think this much is sufficient for today.